Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Shivangi Mishra. Let's take a look at what we have lined up for you this week. Teachers and staff of Karakoram University in Gilgit, Baltistan held a protest against authority. Skyrocketing inflation in Gilgit, Baltistan starred Eid-ul-Adha festivities. Job fair organized in Karakoram district of Jammu and Kashmir. Akashwani Srinagar celebrates India's G20 presidency. And in our special section of Incredible India, we will take you to Pune in Maharashtra, where a group of young enthusiasts are reviving the traditional handloom art of charkha spinning. Teachers and staff of Karakoram University in the illegally occupied Gilgit-Baltistan held a massive protest against the government of Pakistan. The faculty members and staff complained they did not receive their full salaries even during the festive month of Eid. The Pakistan and the local administration paid no heed to their problems. We have a report. The teachers and staff of the Karakoram University are out on streets against unreasonable deductions in their salaries. There are no classes conducted at the university and a pen-down strike is being observed by the employees. गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकला है कि 23 तारीख को तक तमाम मुलाजमीन को ईद उल फितर उसके लिए तनख्वाह ईद उल अज़हा के लिए तनख्वाह दिया जाएगी कल। लेकिन कल हमारे ट्रेजर ऑफिस से एक नोटिफिकेशन निकला है कि हमारे पास फंड नहीं है, यूनिवर्सिटी क्राइसिस में जा रही है, कि पैसे नहीं है, कि ये नोटिफिकेशन कल कर रहे हैं हमें। तो अभी हम मुलाजिम छोटे मुलाजिम हैं यहाँ पे, तकरीबन हम उनके हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। हमारा तो कोऑपरेटिव बैंक से हम लोगों ने लोन निकाला है, किसी का 10,000 किसी का 15,000 कटता है। हमारा बेसिक इतना नहीं है, हमारा 20 से 24,000 तक हमारा बेसिक है। अगर वो वहाँ पे कटेगा तो हम ईद की धूम में अपने बच्चों के लिए कहाँ से ले लेंगे? ये हुक्मरान हमारा सोचते नहीं है। यहाँ पे जो बैठे, जो हमारे वाइस चांसलर साहब को भी सोचना चाहिए। The administration of Karakoram University had made a decision to pay only half the salaries to the teachers and their employees for the month of June. The employees found it hard to even celebrate their most significant festival of Eid. Gilgit-Baltistan, a poverty-stricken region, receives no funding from the Pakistan government and its stooge administration for the development of universities and educational institutions. More so, Pakistan does not want the people of Gilgit-Baltistan to be educated. इधर से एचईसी न दे दे, उधर से हमारी जी भी गवर्नमेंट न दे दे, तो हम जाएं तो कहां जाएं? 2018 से हम लगे हुए हैं, इस वक्त 250 मिलियन से ऊपर हमारा खसारा जा रहा है बजट का। वो खसारा आते आते अब वक्त ये आया कि पे करने के लिए तनख्वाह ही नहीं, ठीक है, आधी तनख्वाह देने का ऐलान हुआ। इसके बाद हम रोजाना कहते हैं यार ग्रांट इन एड हमें यहाँ जी भी गवर्नमेंट हमें दे दे, इधर भी दे दे, बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी दोनों को दे दे। अच्छा, या एचईसी हमें फंडिंग करे, क्योंकि गरीब एरिया है। हम इस्लामाबाद की तरह नहीं है, हम पंजाब की तरह भी नहीं है, हम केपी की तरह भी नहीं है, मतलब गरीब एरिया के गरीब बच्चे हैं। The employees of the Karakoram University have vowed to continue their strike until their full salaries are paid to them. Seven decades of Pakistan's misrule has brought Gilgit-Baltistan to a state where its residents are financially broken and the young generation sees no future, no hope for development. The people of illegally occupied Gilgit-Baltistan are suffering under the misrule of Pakistan.
The high inflation and several other problems have circled the residents. Their festive season of Eid went south as they have no money to feed their families and spend on celebrations. We have a report. This year, the festival of Eid ushered in with sadness rather than joy and merriment for the people of Gilgit-Baltistan. The back-breaking inflation has ruined the lives of people in Gilgit-Baltistan. Livestock traders complain that the rates of livestock and other items have more than doubled compared to previous years. पूरी दुनिया बल्कि पूरे पाकिस्तान का आपको पता है कि आटा कहाँ तक पहुँच गए, डालडा कहाँ तक पहुँच गए, माल कहाँ तक पहुँच गए। तो बेचारे जो कारोबार करते हैं माल मवेशी की, वो वहाँ से ज़्यादा कीमत देकर, महंगी कीमत देकर मंडी में लाकर सस्ता कैसे भेजें। लोग सही कह रहे हैं कि महंगा दे रहे हैं, लेकिन लोग ये इस बात को मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि जो माल यहाँ पे आता है वो पीछे आगे पीछे से आता है, और आजकल जो इधर ये माल पहुंच रहा है वो पिछले साल की निस्बत यानी डबल से भी ऊपर है। अगर पिछले साल आपने 20-30 हज़ार का लिया है तो आज इस टाइम पे वो 60-70 हज़ार 80 हज़ार का है। 1 लाख वाला इस साल 2 लाख का है। तो जब माल इधर महंगा पहुंचेगा तो जाहिर है यहाँ के लोग जो व्यापारी हैं वो भी महंगा आगे यानी ट्रांसफर करेंगे माल को। The prices of basic needs such as petrol, wheat and other essential commodities have spiraled out of control. In such a scenario, even the thoughts of celebrating Eid were obliterated from the minds of people. All they demand is just a little to feed their families. The livestock people wanted to purchase for Eid was out of their budgets. पिछले साल की निस्बत इस साल तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़्यादा रेट बता रहे हैं, डबल से भी ऊपर है। पिछले साल हमने खरीदा था कोई 55 का, वो इस टाइम ये 1,05,000 1,20,000 रुपये बता रहे हैं। तो गलती इनकी भी नहीं है, ये बेचारे साल भर इनको खिलाते पिलाते हैं। महंगाई इतना हुआ है तो जाहिर बात है इनमें भी रेट्स बढ़ जाएंगे। The economically crumbled Pakistan is, however, a mute spectator in the scenario where its illicit policies and nefarious schemes have ravaged the economy of Gilgit-Baltistan. The people of Gilgit-Baltistan at many occasions have held several demonstrations against the regional government and Pakistan in the past, but their voices go unheard. The future seems bleak for the people under Pakistan's illegal rule in Gilgit-Baltistan. Moving on to the Union Territory of Jammu and Kashmir. The Indian government has been instrumental in providing a holistic development to the Kashmiri youth. A job fair was organized in Kulgam by the District Employment and Counselling Centre to harness the potential and aptitude of the Kashmiri youth. Many private and government departments were present for placements and several candidates received on-spot offer letters. Take a look. Ever since the abrogation of Article 370, the whole of Kashmir has been showered with a number of youth-centric events and programs. The administration is putting concerted efforts to benefit the people at large through its various welfare schemes. To encourage and empower the youths of Kashmir, a job fair was organized in the office premises of the District Employment and Counselling Centre in Kulgam district of Jammu and Kashmir. The fair facilitated smooth interactions between job seekers and the job providers through this platform. मैंने पीजी किया है कंप्लीट, उसके बाद मैंने बीएड किया कंप्लीट
तो मैंने जब बजाज एलायंस देखा तो मैंने उसमें अप्लाई करके अपना कैरियर जो देखा है तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा है। तो मुझे जॉब मिल गया इसमें, मेरी सैलरी जो रह गई ऑलमोस्ट 30,000 अबो रह गई मेरी फर्स्ट जॉब पे भी। तो मैंने सोचा कि मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा है और मेरे कैरियर के एक ये बूस्ट अच्छा करेगा। तो मैं अपने दोस्तों से भी यही गुजारिश करूंगा कि वो भी अपना जॉब जो है गवर्नमेंट के बजाय अगर वो इसमें भी देख लेंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी अप्लाई करेंगे, जीरो से स्टार्ट करना है हमें, तो तभी हम आगे पहुंच जाएंगे। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी उनकी कि वो यहाँ पे आके अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन कीजिए, कंप्लीट करने के बाद वो किसी भी इंश्योरेंस बजाज हो या SBI हो, वो जो भी यहाँ पे कंपनीज है अवेलेबल है, तो उन्होंने एक मौका दिया है हर किसी अनएम्प्लॉयमेंट को। यहाँ बहुत सारी कंपनीज आई है जो बेरोजगार यूथ को एक मौका देता है कि आप आइए इसमें शिरकत करिए कि आपका फ्यूचर रोशन हो जाएगा। और साथ ही साथ हम बहुत सारे अफसरान यहाँ पर भी मौजूद है जिन्होंने हमें मुतासिर किया, उन्होंने स्पीच देकर हमको मुतासिर किया कि आप पढ़ाई कमाई के साथ साथ और कोई भी एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हो। और जो आजकल यूथ है वो फ्रस्ट्रेशन में है, वो कोशिश करते हैं कि यूथ को निकालेंगे और एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म इनको देंगे ताकि वो अपनी जिंदगी चैन से गुजारेंगे। The youths of Union Territory of Jammu and Kashmir are climbing the ladder of development as they are endeavoring to grasp every opportunity they get. The job fair across the district is inspiring youths to participate in large numbers and is proving to be a boon for those seeking jobs. More than 12 private companies and skill development organizations, along with various government departments such as the Animal Husbandry, Women Development Corporation and Handloom and Handicrafts Department, have come up to mentor the Kashmiri youngsters. Around 12 candidates got on-spot job offer letters after evaluation of their academic records and ability to perform in the industries. A fresh registration of 350 candidates was made during the job fair, and 257 candidates were shortlisted for further rounds. इस तरीके के जो ये जॉब फेयर मेलाज होते हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, जो डिस्ट्रिक्ट जो एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर्स जो ये प्रोग्राम हेल्ड करते हैं, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सबसे पहले तो, क्योंकि एक मौका मिलता है हमारी जो जॉब सीकर्स होते हैं और जॉब प्रोवाइडर्स होते हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म मिलता है आमने सामने आने का, ताकि वो अपनी एक्सपीरियंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, किस तरीके से हमें आगे जाना चाहिए, क्या कुछ चीज़ें इसमें होती हैं, एक्सप्लोर किस तरीके से इन चीज़ों को किया जाए। हाँ, रही बात यहाँ पे इससे कितना फ़ायदा मिलता है लोगों को, देखिए अभी तक काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला इस चीज़ से लोगों को, क्योंकि जहां तक हम परसों हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़गाम में भी गई, वहां पे भी हमने ऑन स्पॉट 2 लोगों को वहीं पे जो है एम्प्लॉयमेंट दे, और आज का हमारा टारगेट है ऑन स्पॉट 5 लोगों को ही जो है एम्प्लॉयमेंट देना। इसमें सबसे पहली बात जो है, जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट जो काउंसलिंग सेल होती है, ये अपने पोर्टल पे ये जो है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और उसके बाद उसकी एडवर्टीजमेंट होती है कि फलाने डेट पे जो है इस तरीके से यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हो जाएंगी। देन आफ्टर दैट जो है लोग जो उनको वो अवेयर हो जाते हैं और वो यहाँ पे आ जाते हैं, एंड वो अपने साथ रेज्यूमे लाते हैं, जिनके साथ रेज्यूमे नहीं होता वो यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भरते हैं और अपने अपने फील्ड्स में के रेलेवेंटली वो जो है अपना अपना जॉब जो है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी भी यही कोशिश होती है जॉब प्रोवाइडर्स की कि हम उनको जो है बेहतरीन तरीके से उनको गाइड भी करें। साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, बाकी डिपार्टमेंट है, कोशिश करते हैं उनको सपोर्ट करने, ताकि एक बच्चा खुद जॉब प्रोवाइडर बने, न कि जॉब सीकर रहे। Youths hold the key to any nation's growth, and in order to give them more power, the government has been supporting a number of activities and projects like these in Kashmir. Such initiatives in Kashmir shall help produce a large number of professionals and entrepreneurs who would later contribute to nation's progress. Moving on, to celebrate India's presidency of G20 and 75 years of independence, Akashvani or All India Radio, Srinagar is holding a 3-month-long entertainment and awareness campaign.
ever since the Union Territory held G20 Tourism Working Group Conference in Srinagar in May, there is a wave of enthusiasm and hope among the people of Kashmir. During this 3-month campaign, Akashvani is organizing programs such as theatres, debates, music shows and much more to reach the public of Kashmir and make them aware of the positive impact the India's G20 presidency is going to bring in the Union Territory. Take a look. Celebrating India's maiden presidency of G20 and 75 years of independence, Akashvani Srinagar is organizing a 3-month-long campaign to publicize and disseminate its culture around the globe. The G20 Tourism Working Group Conference held in Srinagar in May has not just promoted the centuries-old traditions of Jammu and Kashmir on international platform, but will also attract big investments in the Union Territory. Coincidentally, on July 1st, Akashvani Srinagar also celebrated its 75th anniversary as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. आकाशवाणी की तरफ से जो इंडिया की प्रेसिडेंसी है G20 की, उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक कैंपेन शुरू किया गया है और ये सारे देश भर में 2-3 महीनों तक चलेगा। और इस सिलसिले में हम पब्लिक ओरिएंटेड इवेंट्स करेंगे, स्टूडियो बेस्ड इवेंट्स करेंगे और मुख्तलिफ जॉनर्स में प्रोग्राम्स करेंगे। उसमें थिएटर्स होंगे, उसमें कॉन्सर्ट्स होंगे, उसमें डिबेट्स होंगे, उसमें यूथ फेस्टिवल्स होंगे और साथ में जो आकाशवाणी का 75th ईयर कंप्लीट होने जा रहा है इस मंथ के एंड पर 1 जुलाई को प्लैटिनम जुबली मन रही है, उस सिलसिले को भी आज इसके साथ ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मकसद ये है कि जो सोच की लेवल पर तब्दीली आ ही गई है उसको कनेक्ट करने के लिए, पब्लिक के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ने के लिए हम ये कैंपेन शुरू कर रहे हैं और आज इसकी पहली कड़ी है। कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं और कुछ डायलॉग्स हैं। Kashmir, which has always been at the top of the bucket list as the most sought after tourist destinations, has taken a leap as it anticipates numerous opportunities post the summit. To keep a pace with the development drive in Jammu and Kashmir, the Akashvani Srinagar is striving to engage more people through its 3-month-long campaign. Various programs which included the patriotic songs, dialogues and speeches by the experts were led by participants on the occasion of the first episode of its campaign. जी, आज मेरे लिए बहुत स्पेशली दिन है यहाँ पे परफॉर्म करने का, क्योंकि 2 रीजंस हैं। एक तो जो सेलिब्रेशन है इंडियाज़ प्रेसिडेंसी G20 का, दूसरा एक बहुत ही खास मौका आने वाला है अभी 1 जुलाई को, जो प्लैटिनम जुबली ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर सेलिब्रेट करने वाला है। तो उसके उस हवाले से जो है ये आज कार्यक्रम मुनक्किद किया गया है, जिसमें हमें मौका दिया गया ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर का, जिसका मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज के प्रोग्राम की शुरुआत अभी नया एक लंबा सीरीज स्टार्ट होने वाला है प्रोग्राम्स का, जिसमें थिएटर भी अभी हमको बताया गया कि वो भी अब आगे कंटिन्यू होगा, प्रेजेंटेशंस रहेंगी। तो पहला प्रोग्राम हम ही से शुरू किया गया, हार्मनी स्क्वायर ऑफ J&K है हमारा जो आज प्रेजेंटेशंस दे रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। G20 जब से स्टार्ट हुआ है तब से आप जैसे जानते ही हैं कि एक बहुत ही कल्चर को लेके काफ़ी एक हमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी इंक्लिनेशन देखने को मिल रहा है कल्चरल प्रोग्राम्स में, जो कि बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव एक मैसेज आता है। और हम आर्टिस्टों के लिए, हम आर्टिस्ट कम्युनिटीज़ के लिए, कश्मीर की स्पेशली, जम्मू कश्मीर की स्पेशली, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि जब तक आर्ट आपका प्रिजर्व नहीं होगा, जब तक आर्टिस्ट आपके खुश नहीं होंगे, तब तक आपका कल्चर प्रिजर्व नहीं होगा, और जहाँ कल्चर नहीं है तो वहाँ पे तो कुछ फिर आगे रहता नहीं है। तो इसलिए इस हवाले से G20 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर के ऊपर है, और आगे भी हमें उम्मीद है इसी तरह भारत सरकार हमें सपोर्ट करती रहेगी और इसी तरह कार्यक्रम आगे चलते रहेंगे।
Apart from its evident beauty, Kashmir has always stood out from the rest through its world-famous prose and poetry. People feel the G20 summit under India's presidency would restore the nobility of its literary works like Sufi poetry and make the world aware of it. मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम की जो ज़रूरत थी वो ये थी कि जो ये कौम है हमारी, इसमें बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनको बहुत नज़रअंदाज किया गया था। तो इस प्रोग्राम की वसादत से हमें ये पता चला कि हम आने वाले दिन में, आने वाले वक्त में हम ऐसे अपने मॉड्यूल्स जो है, हमारे कल्चर हो, हैंडीक्राफ्ट हो, लिटरेचर हो, ट्रांसलेशन हो, म्यूज़िक हो, फोक म्यूज़िक हो, कुछ भी हो, तो हम इसको कैसे दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो इनका ये मकसद ये था कि हमें प्रमोशन कैसे करनी पड़ेगी अपने कल्चर की, अपने हेरिटेज की, अपने आर्किटेक्चर की, अपने आर्ट की। तो ये एक मकसद था इसके पीछे। The people of Jammu and Kashmir are overjoyed as an event under G20 was progressed successfully in Srinagar in May. Akashwani Srinagar's 3-month-long celebration campaign too is bringing joy among the public of Srinagar. Moving on. Charkha, the spinning wheel that once became a symbol of India's Swadeshi movement during the British era, was gathering dust in museums. To revive this eco-friendly handloom technique of Khadi making, a group of youngsters in the Pune city of Maharashtra has come up with an initiative to provide free workshops in Charkha spinning. Every Sunday, many students and working professionals come to Charkha Sangh in Gandhi Bhavan in Kothrood area to learn the art and try their hands on Charkha, an incredible engineering masterpiece from the Indian history. A group of youngsters have started a unique initiative in the Kothrood area of Pune in Maharashtra. The group Kothrood Charkha Sangh is imparting free training for Charkha spinning, a traditional Indian handloom technique. Around 15 to 20 people gather at the premises of Gandhi Bhavan every Sunday to learn this art. Many corporate professionals and college students from different fields of work and studies come to attend these workshops. They believe the traditional way of using spinning wheel helps improve their concentration. The art, they say, helps them understand the efforts of handloom workers and ensues a feeling of gratitude and respect for everyone's profession and work. वैसे तो ये इलाके में बहुत अलग अलग टाइप के इंसान आते हैं जो कि वो एजुकेशन ले रहे हैं या तो कोई आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट्स है, वो सब लोग इधर आते हैं। उसमें से उनको बहुत अलग तरह का आनंद मिलता है। मेडिटेशन जैसा समझो या कंसंट्रेशन लेवल उनका बढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ऐसे लोगों को लगता है। और वो इधर बैठने के बाद हर एक आदमी को उसका एहसास होता है कि उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। When you buy a shirt or a trouser from outside, from a shop, you have very little idea of what actually goes into making it. But when I started learning this Soot Katai, that entire supply chain started becoming apparent. I got to know how, first of all, you start with the raw cotton bud, right, when it is grown from the plant. So take the seed out, then you card the cotton, then make perus out of it, and then start to draw the yarn, which is what we do on charkha. And then that yarn gets woven into a fabric later on. Now that process also we got to know when we visited Gopuri, where there are handlooms and weavers who, people like Madhav Kaka, who create the yarn, that is woven into a fabric manually. And that's how finally a Khadi fabric is made. So it's hand spun and hand woven fabric.
and that is this process is very illuminating, interesting. It tells us what sort of effort is involved in making this one piece of one shirt or a trouser that we casually buy when we go out in the market. So yeah, that's very informative, and I look forward to at some point wearing a shirt that is made out of the yarn spun by myself. The spinning wheel or charkha has been of great importance in the freedom struggle of India. Charkha became a symbol of Mahatma Gandhi's Swadeshi movement in 1905 that appealed to Indians to boycott import of clothes and encourage them to spin their own clothes. Although the art of spinning wheel was slipping off to extinction in the modern era, the charkha sang is still keeping the traditional art alive. हम इस्तेमाल करते हैं जो सब पूरे नेचुरल रिसोर्सेस है इसमें, और जितना हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बना ही नहीं सकते हैं, तो उसके वजह से ये जो कंजम्पशन है उसके ऊपर नेचुरली कंट्रोल आता है. तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें बाह्य ऊर्जा की ज़रूरत नहीं, सब अपनी मेहनत की ऊर्जा इस्तेमाल करके हम करते हैं. तो जब आगे चल के फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तब आप क्या करोगे? तो तब तक तो ये एक कला के रूप में कम से कम जिंदा तो रहना चाहिए. इसीलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सीखें और अपने अगली पीढ़ी को सौंपें ये स्किल. Madhav Sahasrabuddhe, who is a follower of Mahatma Gandhi and an enthusiastic charkha spinner, conduct workshops in the Gandhi Bhavan in Kothrood. The Charkha Sangh members are promoting this traditional Indian skill, and they are extending these workshops to other areas as well. That's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care.